Today we are starting another section from 11.9 to 24. So what we were discussing earlier, basically, it was like Krishna had given divine eyes to Arjuna, and we were discussing those eyes were not like eye transplant. No transplantation of eyes were done. In fact, जो आइज का नेचर है, स्वभाव है, वो भगवान ने इसका बदल दिया. राइट, इट वाज नॉट समथिंग के डिवाइन आइज दी, उसको निकाला पुरानी आंखों को और नई आंखों को डाला. देयर इज नथिंग लाइक दैट, एनीथिंग, नो सच थिंग वाज देयर, राइट? सो so Krishna was telling like dadami दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, जो है दिवाइन आंखें, दिव्य आंखें दे रहा हूं ताकि आप मेरे ऐश्वर्य को देख सके. So in this material world, actually there are so many things which we can't perceive. In fact, those things are material only, those things are not spiritual. Those things are material only, those things are not spiritual. Still we cannot perceive, and many times we want to challenge that if God is there, then I want to see. So how you will see here, if Arjuna wanting to see, then Krishna is giving him some divine chakshu. So just like we see, we have to understand it Shastra Chakshusha. What eyes were given by Krishna to Arjuna, and he could understand Krishna like that. In similar manner, we can also understand Krishna yathat, as like we were discussing in the last class. Yathat means as it is. तो हम कृष्णा को समझ सकते हैं if we hear Krishna instead of watching Krishna. तो हम कृष्णा को आंखों की बजाय कान से समझ सकते हैं कलयुग में. So just like if you want to understand now the expansion of Krishna, which is the universal form. So universal form is actually expansion of Krishna, right? विराट रूप जो है भगवान का एक्सपेंशन ही है. तो जैसे बहुत सारे लिविंग एंटिटीज हमारे शरीर में रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, बहुत सारे सेल्स रहते हैं, जर्म्स रहते हैं. इसके अलावा भी बहुत तरीके के लिविंग एंटिटीज हमारे बॉडी में रहते हैं. तो वो अपना जीवन कैसे चला पाते हैं? जब हम अपना जीवन चला रहे होते हैं. जैसे ही हमारा जीवन खत्म, तो उनका भी लाइफ क्या होता है, खत्म हो जाता है. ये चीज हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे. तो ठीक उसी प्रकार जब कृष्णा इस यूनिवर्स के अंदर एंटर करते हैं, राइट, इन फॉर्म ऑफ परमात्मा, इन फॉर्म ऑफ क्षीरोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, तब जाके सारे के सारे जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं वो एनलिवन होते हैं. सारे माउंटेन्स, रिवर्स and so the things, they starts manifesting themselves, and they get maintained also by the arrangement of Krishna. You see, just like in our body, germs, bacteria, they come and they are maintained also. हमको उसका बहुत ज्यादा ध्यान अलग से नहीं रखना पड़ता इन सबका, राइट? ऑटोमेटिकली देयर इज सम अरेंजमेंट. उसी तरीके से इस यूनिवर्स के अंदर भी सारी की सारी चीजें जो है कृष्णा के अरेंजमेंट्स के द्वारा बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो जाती है. So these things can be understood by a person who is hearing about Krishna more and more. So actually this universal form is not the original form, it is not the highest form as some people understand, but this is expansion of Krishna. This universal form is subordinate to Krishna actually, right? So why then Arjuna is asking this demand कि मुझे आपका यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए, अगर उनके सामने ओरिजिनल फॉर्म है कृष्णा का. तो एक्चुअल में कलयुग में कोई भी व्यक्ति क्लेम करता है, बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स थोड़ा सा फेमस होते हैं और अपने आपको भगवान बताना शुरू कर देते हैं. और उसी चीज को रिमूव करने के लिए, उसी डाउट को रिमूव करने के लिए अर्जुन ने क्या किया,
जो है कृष्णा से इस चीज की डिमांड की. Anyone ask us and tells us that I am God, then we should ask him, show your Virat Rupa. Please show your Virat Rupa. So now, to understand Krishna and to understand the spiritual science, this is very, very important thing. And that's how Arjuna don't want to compromise. वो किसी के तरीके को compromise करना नहीं चाहते. उनको समझ में आ जाएगा कि कृष्णा ही supreme personality of Godhead, but he is worrying about all of us. So in the next shloka, which we are going to discuss today, let us see what further things are there in this chapter 11. Sanjay uvacha evam ukto tato rajan mahayogeshwaro harihi dashayan ashparthya paramam rupameshwaryam. Sanjay said, now Sanjay, after hearing all this, Sanjay भी सुन रहे हैं इस भगवत गीता को, तो वो किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं. O king, speaking thus, the supreme, the Lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna. And just Arjun जो है वो देखना चाहते थे भगवान का इस विराट रूप को देखना चाहते थे, और इस विराट रूप का दर्शन जो है भगवान अर्जुन को यहाँ पर करवाया. Now next shloka. अनेक वक्त्रम नयनम अनेक अद्भुतम दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यत्युदम अत्युधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सहश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम. Arjuna saw in that universal form unlimited mounted eyes, right? बहुत सारे अनंत मुंह और अनंत आंखें. It was wondrous. The form was decorated with divine, dazzling ornaments and arrayed in many garbs. He was garlanded gloriously, and there were many scents smeared over his body. All was magnificent, all expanding, unlimited. This was seen by Arjuna. So can you imagine what power Krishna has given to Arjuna? These are already there in this creation. This universal form of Krishna is already there, but we can't see. But Arjuna was able to see. Arjuna was able to see. Now, so we see around us, we consider many things not useful, right? As much as we are प्रोग्रेस, लोग जितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं स्पिरिचुअल मटेरियल टेक्नोलॉजिकल थिंग में, सो वी आर थिंकिंग दैट सम थिंग्स आर नॉट ऑफ मच यूज. लेकिन इस संसार के अंदर सारी की सारी चीजें यूजफुल है. ऐसा संसार है भगवान ने जो बनाया है जहां पर हर चीज कृष्णा से कनेक्टेड है. देन हाउ इट कैन बी यूजलेस, राइट? एंटायर क्रिएशन, इवन स्मॉल टू स्मॉलेस्ट, everything bigger than biggest, everything is useful, you see. So just like some time back, you might have been hearing that medical science, they were telling that हमारी ये gland जो है ये कम use आती है, ये ज़्यादा useful नहीं है. What was telling this thing? Pituitary gland, actually they were telling it's not much of much use. Now also they tell some of the organs in our body, they are of no use, you see. So but now that pituitary gland is considered one of the master gland actually, which is controlling so many other glands, right? So like there's so many things, because our senses are imperfect. So the modern, whether it is medical science or it's a technology or any other science, it's not perfect. It's not perfect. Everything is wonderful here in this creation. Everything.
In fact, this medical is also wonderful, but because we are trying to get that knowledge by our own endeavors, imperfect senses, that's why the science is becoming imperfect. Otherwise, पहले किसी rat, cat, mat और bat किसी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता था, और उसके बावजूद वो जो मेडिसिन है वो परफेक्ट रहती थी, बहुत बढ़िया रहती थी. लेकिन आज के जमाने में इतना उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं देती है कि वो मेडिसिन हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी. राइट, सो मेनी मेडिसिन एंड समटाइम दे कम इन द मार्केट, समटाइम दे आर अगेन बैंड, उनको दोबारा से बैन किया बिकॉज our senses are imperfect, so those research are also not perfect. कोरोना का जो है एंटीडोट बना, और लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं. कुछ लोगों का कोरोना से डेथ नहीं हुआ, लेकिन जो वैक्सीन है उसकी वजह से डेथ हो गया. इसी सो when a person he don't have belief on the creation of the Lord, which is happening today, a lot of people, they are not having faith on God, complete faith on the God. That's why this all complete halabaloo is happening. उसी तरीके से लोग जो है स्पिरिचुअल साइंस में भी बिलीव नहीं करना, उनको लगता है स्पिरिचुअल साइंस इज ऑफ नॉट मच यूज. दिस इज सिंपली फॉर दोज पीपल हु आर सेंटिमेंटल, हु आर हैविंग नथिंग टू डू आइदर, और जो लोग केवल डरते हैं, कर्म करने से डरते हैं, लोगों को फेस करने. सो दोज विल फॉलो स्पिरिचुअल साइंस. समटाइम दे थिंक Prabhupada, when he went to America, so people were asking him, why have you come to America? Prabhupada made them understand many times कि मैं यहाँ पे कुछ भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि आपको कुछ देने के लिए आया हूँ. They thought what Prabhupada is doing this Hare Krishna is a just useless thing. So, but now so many people, because they are following Krishna consciousness, they have understood, you know, this is of so much use to us. Even so many foreigners, they are also understanding the value of Krishna consciousness, right? So this Krishna consciousness, the science of Krishna consciousness is very, 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 very important. Very, very important. And when we follow this spiritual science under a bona fide spiritual master, we are as good as Arjuna, who is seeing the Virat Rupa of Krishna, because you will understand Krishna as it is. You see? So actually, someone was telling that one of our Prabhu, he was telling that he met to some director in a college, and that college director was telling that when he was small, when he was in college, so they went on some किसी टूर पे गए थे, तो वहां पर पास में जंगल था, तो उनको जमा के चलो हम लोग जंगल जाके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं. इट वॉज वेरी डेंस फॉरेस्ट एक्चुअली. तो कुछ 3-4 उनके दोस्तों के साथ वो घूमने के लिए निकले. सो देन सडनली दे सॉ अ योगी ओवर देयर एंड ही वाज लिविंग. इट सीम फ्रॉम हिज उनकी वेशभूषा से ऐसा लग रहा था कई साल से वो वहां पर थे, बड़ी बड़ी जटाएं लाइक दैट. सो देन दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग. उन्होंने देखा वहां कोई किसी तरीके का किचन नहीं दिखा उनको, किसी तरीके का कोई लाने का कोई साधन नहीं दिखा उनको. सो देवर सरप्राइज कि हाउ दिस योगी इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ. तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, आपको खाने का भी कुछ हमारे पास हमको सामान नहीं दिख रहा है. देन ही टोल्ड इट्स वेरी इजी एक्चुअली, एंड ही ब्रॉट इमीडिएटली सम रूट, जो जड़ रहती है किसी पेड़ की, उस पेड़ की जड़ को लेके आए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इनको खिलाना शुरू कर दिया. ये सही बात है बिल्कुल. एंड जैसे ही उनके खिलाना शुरू किया, उनके मुंह से मेंढक बाहर निकलने लगे. सो दे वर सरप्राइज, व्हाट इज दिस हैपनिंग टू अस. दे बिकम वेरी वेरी फियरफुल. लेकिन कुछ समय बाद में उनकी जो भूख है वो बिल्कुल गायब हो गई. एंड इनफैक्ट व्हेन दे केम बैक आफ्टर 2 or 3 meals also, they were not even for the third meal, fourth meal also, they were not feeling hunger. You see, so this is actually a science which modern science is not knowing. Our people who are following this Ayurveda, they were knowing this thing very much. So like that, everything in this creation is having its place. It's very, very useful actually. But under ignorance of sense gratification,
हम क्या है उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं या उस चीज की वैल्यू हम समझ नहीं पाते, हम अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और जो रियल जो वैल्यू किसी चीज को देना चाहिए उसको हम दे नहीं पाते। सो जस्ट लाइक व्यास देव जी हम लोग देखते हैं, पराशर मुनि हम देखते हैं और इतने सारे ऋषि मुनि, ऋषि वाल्मीकि, सो दे वर एबल टू सी द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। किसी तरीके का बाहरी उनको मदद नहीं चाहिए होता था, सिंपली एक जगह पर बैठ के उन्होंने सारे के सारे संसार को देख लेते थे, पास्ट को देख लेते थे, फ्यूचर को भी देख लेते थे। संजय यहाँ पर बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के मैदान की बातों को धृतराष्ट्र को बता रहा है, जो हमको पास में जाके भगवत गीता समझ में आने, इतना दूर से बैठ के संजय उसको क्लियरली सुन पा रहा है। सो नो नीड ऑफ सैटेलाइट मॉनिटरिंग वाज देयर, नो रिले मॉनिटरिंग वाज देयर, बट स्टिल पीपल वर हियरिंग थिंग्स very nicely, the things nicely as it is. So those technology which we are trying to develop today, it's a just a small fragment जो पहले के जो लोग उसका यूज करते थे, इसका आज जो है बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट है आज जो हम लोग साइंस यूज कर रहे हैं। So just like that science was known to Arjuna, not sorry, Sanjay, Ved Vyas ji and other such great personalities, things were revealed to Krishna automatically. वही चीज कलयुग में हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र का उच्चारण करने से वो हमें क्या हो सकता है, रिवील हो सकता है। इट कैन गेट रिवील टू अस। We have to chant Hare Krishna mantra bas nicely, that's it, with full faith. We have to try to hear each and every word, just like Madhu Pandit Prabhu, His Grace Madhu Pandit Prabhu tells in his session, it should be soulfully chanted, but before soulfully it should be mindfully. हमको at least वहां पर present रहना है, what I am chanting, our mind should not go here and there. For that he has told some techniques, some tips which we should keep on practicing, and 100% हमारा चैंट का क्वालिटी इंक्रीज होता जाएगा। So just like earlier these people, they did a lot of tapasya, a lot of sadhana, then only they could see far distance what is happening, they could understand Krishna। उसी तरह हमें चैंटिंग के लिए भी तपस्या करना होगा, right? But because we don't do that tapasya, we ignore such things, so we suffer in this material world. Ignorance is causing the suffering in our life. So Srila Prabhupada was telling once in his class, morning class, that in his neighbor when he was young, he was grahastha. So some people, they ate lot of pakoras, खूब सारे पकोड़ा खाए कुछ उनके पड़ोसियों ने, refined oil में बने हुए। So though people denied them that don't eat, but still they ate so much that they died because they suffered from cholera and they died. And other people, they become afraid then, oh, what thing has happened to them. So actually this is given already in Ayurveda. That time when they died, Prabhupada is telling, this people, scientists, scientific people, they were advertising, refined oil is very good for health. Ghee is not good for health. Don't eat ghee. Eat everything in refined oil. But Ayurveda has always been telling that ghee is good for inside and oil is bad. Ghee is for inside and oil is out for outside, not for eating purpose, particularly refined oil. You see, so excess of oil, it causes always sickness. Ayurveda has been telling for a long time. That's why if you see in ashram, many of the ashramas generally, they will put lot of ghee, but they will never put lot. They will put lot of other masalas like dhania, kali mirch, which is good for health, but not a lot of chili. Because if you put a lot of chili, it's difficult to maintain brahmacharya. If you use a lot of masalas, then it's difficult to maintain brahmacharya. Our health also is not good. We feel चिड़चिड़ापन, गुस्सा and all those kind of things. So generally Ayurveda tells कि हमें बहुत ही सात्विक आहार करना। सात्विक आहार मतलब कम जो है ऑयल रहना चाहिए,
और अगर घी हम यूज करें तो शुद्ध देसी गाय का घी, जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है डाइजेशन इफेक्ट. So these things are always there in our scriptures, and since people violated the scriptures, they are now suffering. Ignorance. Suffering is due to ignorance. You see. So these things we should follow. Generally, हम लोग हमारे sensual activities की वजह से ignorance में पड़ते हैं और फिर जो है सफर करते जाते हैं. So then Srila Prabhupada tells that we need not to have so much luxury in our life. So much luxury always causes suffering generally, right? Instead of that, we should try to live a life of austerity. Tapasya wali life हमको जीने की कोशिश करनी है in every manner. Of course, if some luxury is coming to you, you can use that luxury, but use that as much as possible for Krishna. Try to avoid that luxury for personal comfort. Right? If the service needs that thing, आपको भगवान की सेवा के लिए उस luxury को use करना है, then we can utilize that service, that luxury. And otherwise, if that service can happen without that luxury, then we should utilize less luxurious things in our life. Right? So Srila Prabhupada then tells further that just like a small child, he's like an ignorant person, right? He doesn't know what is happening with him, what to eat, what not to eat, when to sleep, when to eat, doesn't know anything. तो उसको spiritual science समझाना बड़ा मुश्किल काम है. So about this, if you want to take out anyone out of the suffering, Prabhupada tells we should give him training as soon as possible when he is 5 years old. जैसे 5 साल का हुआ तो हमें उसको स्पिरिचुअल साइंस देना शुरू कर देना है, बिकॉज उसके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है इन चीजों को लेके. So if a person develops a spiritual vision, that's a wonderful thing. Actually, his whole life got changed. Just like Srila Prabhupada, he recalls कि उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ इसमें कैसे बाहर आया, मैं कैसे पैदा हुआ. Now she tried to explain that she could explain to Prabhupada कि how did he took birth. So she tried to explain, but Prabhupada could not understand. He's still बच्चे बहुत adamant रहते हैं. No, I want to know how did I come out, कैसे मेरा जन्म हुआ. Then mother showed her navel. उन्होंने अपनी नाभि दिखाया, बोले कि तुम जो है यहाँ से पैदा हुए. But still he could not understand. So just like a small child, he'll keep on speculating for many subject matters. हम सभी को पता है जब हम छोटे थे तो बहुत सारे subject matters पे हम लोग बहुत speculation करते थे जब हमें समझ में नहीं आता था. तो बच्चों के लिए समझना almost impossible है these subject matters. लेकिन तो उसी तरीके से आज के जो मॉडर्न साइंस है उनके लिए ये सारी चीजें समझना बड़ा मुश्किल है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है. इट नीड्स हायर कॉन्शियसनेस. यू नीड टू ग्रो इन कॉन्शियसनेस. तो जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तब उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि उसका जन्म कैसे हुआ, लेकिन छोटे होने पर वो नहीं समझ सकता. उसी तरीके से जब हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो जाती है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जब हम लोग इवॉल्व हो जाती है, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डिड दिस यूनिवर्स कम, किस तरीके से ये यूनिवर्स बना, हाउ डिड कृष्णा क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, हाउ डिड कृष्णा expand himself into Mahavishnu, Shirodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu. Then only we can understand. And good thing for us is that this knowledge is explained by Krishna himself directly here. So when we understand this thing, then actually when we develop our spiritual vision, then only we can understand this whole science. So I think this is the time is over. We'll understand more about this tomorrow. Today we have understood basically that everything is important in this creation because it's a part of Krishna's arrangement, Krishna's creation, Krishna's Virat Rupa.
एंड अगर हमें कृष्णा को समझना है तो हमें हमारे स्पिरिचुअल को डेवलप करना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो हमारे लिए पॉसिबल है कलयुग में बाय चैंटिंग नाइसली हरे कृष्णा महामंत्रा एंड फॉलोइंग अदर थिंग्स गिवन बाय श्रील प्रभुपादा, अदर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय प्रभुपादा एज इट इज, राइट। हमें ये नहीं देखना कि हमारे आस पड़ोस में कितने लोग नहीं कर रहे हैं, हमें यह देखना है कि मुझे कितना आगे बढ़ना है। संसार में बहुत सारे सिंसियर लोग हैं, हमें उनको देख के इंस्पिरेशन लेना है। कई बार हम लोग के मन में रहता है प्रभु मेरे आसपास में कोई नहीं जो कृष्णा कॉन्शियसनेस को इतना अच्छे से फॉलो कर रहा है, नो प्रॉब्लम, देन टुडे दिस द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, राइट। यहाँ पर आप चाहें जहां पर कांटेक्ट में रह सकते हैं डिवोटीज के, राइट। सो विद दिस विल फिनिश, इफ यू हैव एनी डाउट